Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. आज की इस एपिसोड में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ इंडो पैसिफिक राइवलरीज और स्पेशली द इमर्जिंग कोल्ड वॉर, जो कि ब्रॉडली स्पीकिंग इमर्जिंग कोल्ड वॉर तो कहलाती है, बट अगर हम उसके अंदर प्रिसाइज नेचर में जाएं, इट रेफर्स टू the conflict between United States and China, which is taking place for almost a decade or more than a decade, but उसी conflict की एक जो most recent shape है, जो उसके most recent dynamics हैं, उसके पर हम आज बात करेंगे. नाज़रीन, there are different ways in which this conflict can be analyzed, but हम तीन मेन बुनियादी नुकात पे बात करेंगे. सबसे पहले तो conflict है क्यों, why there is conflict. ऑब्वियसली हम इस पर ज़रा बात करेंगे जाके. फिर हम बात करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिफरेंट स्टेट्स और जो स्पेशली मेजर पावर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो होगा इन इस कॉन्फ्लिक्ट का, इन स्ट्रेटजीज़ का इम्पेक्ट क्या होगा रीजन के लिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, और ब्रॉडली दुनिया के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या हो रही हैं. इन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे. तो नाज़रीन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट की नेचर क्या है. जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मेन कॉन्फ्लिक्ट तो इंडो पैसिफिक में यूएस और चाइना के दरमियान में है, लेकिन इसी रीजन में देर आर मल्टीपल फॉल्ट लाइन्स, देर आर मल्टीपल राइवलरीज दैट आर प्रेजेंट. सम आर मोर सिग्निफिकेंट देन अदर्स, बट दे एग्जिस्ट. वो नोटेबल फॉल्ट लाइन्स कौन सी हैं नाज़रीन? उसके अंदर जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो यूएस चाइना का है, एक हेजेमोनिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे. बिसाइड्स दैट there is conflict of South China Sea. Additionally, there is conflict between different other states because of boundary disputes, island disputes, and other historical factors. Similarly, there are issues of economy, that is trade between states. There are divisions on the issue of climate change, and most recently there was an issue on AUKUS. AUKUS also had some kind of reservations from within this region besides China. And then very important issue in this region is that of North Korean nuclear crisis. So nothing, यहाँ पे multiple fault lines हैं, न्यूक्लियर से लेकर एनवायरनमेंट से लेकर इकोनॉमी से लेकर हेजेमनी तक, there are and boundaries तक lots of different conflicts in this region. So this region, despite the fact that it has multiple conflicts, is also known as the region of the future powerhouse of the world. This region, नाज़रीन, इंडो पैसिफिक जो है, it has a major significant not only strategic value but also geo-economic value for the world. Their economies are growing, therefore their influence is growing in the global dynamics and global politics. So let's see, नाज़रीन, why there are conflicts. Why there is conflict in this region? Because I said there are different conflicts, so each conflict has its own dynamics. तो हमारा फोकस नाज़रीन इस क्लास के अंदर मेन जो फोकस होगा दैट वुड बी ऑन द यूएस चाइना राइवलरी ओवर हियर. यूएस और चाइना के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, उसकी बुनियादी वजह द वेस्टर्न perspective in general and particularly the United States perspective that the rise of China is no longer a peaceful China, no longer a peaceful rise of China, which China claimed in the preceding decades. China's power is growing, its economic influence is growing, its political influence is growing, and therefore its military assertiveness is also growing in the region. We have seen Chinese economic assertive in different ways, but militarily we have seen the Chinese threats to Taiwan, जिसके पर हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, लास्ट एपिसोड में बात कर चुके हैं. Similarly, there were also concerns about China's military adventures against India in their border clashes. तो कहीं ना कहीं पे हमें चाइना के हवाले से जो ग्रेजुअल मिलिट्री एक्सपेंशन है वो भी नज़र आ रही होती है. द वेस्ट इज़ वेरी स्केप्टिकल ऑफ दिस राइज ऑफ चाइना, एंड पर्टिकुलरली बिकॉज दिस राइज कम्स विद एन आइडियोलॉजी with a particular value system that is totally unacceptable to the Western governments and Western policymakers. Their perspective is that the rise of China is not through the liberal world order, rather it comes with violations. Sometimes Chinese have circumvented this international order, sometimes they have blatantly violated this order, and therefore if China is allowed to become a global hegemon, it would not only destroy the world order, it would create a catastrophic world order
in the contemporary times. And therefore, they view the rise of China as a threat to their own interest. But not all scholars agree with that, because there were times when after World War II, Japan adopted the Western values, it opened up its economy, it adopted democracy, it adopted the liberal values and abandoned its fascist regime before the World War II. But when Japan started growing in 1970s and 80s, in 1980s, many US scholars started viewing Japan as a potential challenge to the United States. So has the United States considered a state that shared its values as a partner or a competitor? In Japan's case, it was considered to be a competitor. इसीलिए नाज़रीन, क्या राइज ऑफ चाइना को सिर्फ इसलिए कंटेन करना चाहिए अमेरिकन को बिकॉज देयर वैल्यू सिस्टम इज़ अनएक्सेप्टेबल टू द अमेरिकन? सम स्कॉलर्स आर स्केप्टिकल. वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सिंपल जीरो सम गेम के, इसको सिंपल 3D स्ट्रैप के एंगल में देखते हैं, दैट यूनाइटेड स्टेट्स एज अ हेजमॉन विल नॉट टॉलरेट द राइज ऑफ एनी अदर हेजमॉन इन द वर्ल्ड, चाहे उसकी वैल्यू सिस्टम कोई भी हो. But there are, as I said, Nazin, different perspectives हैं that why US and the West in general sees China as a rival and as a threat. Does China also view US as a threat? Is this conflict initiated by the Chinese? Not much. However, as the US policy of containment, as US policies and the Western policies grow assertive, grow aggressive against the China, China has to respond back to it, and China is responding back to it. So this conflict may not be initiated by China, but China is a party to this conflict, and it is taking measures that escalate this conflict. अब नाज़रीन इस पॉइंट पे आते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है. व्हाट आर यूएस स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई यूएस ने? नाज़रीन, लास्ट 3 यूएस प्रेसिडेंट को अगर एनालाइज किया जाए, प्रेसिडेंट ओबामा, ट्रंप और बाइडेन में, तो हमें कुछ चीज़ें तो कॉमन नज़र आएंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन नहीं होंगी. तो एक चीज़ जो बुनियादी कॉमन है, दैट इज़ दैट यूएस व्यूज़ चाइना एज अ राइवल, एज अ थ्रेट टू इटसेल्फ. प्रेसिडेंट ओबामा ने भी ऑफिशियली तो नहीं कहा, बट हिज पॉलिसीज़ वर एक्चुअली they created an indication that it views China not as a partner, rather as an adversary. President Trump, in the National Security Strategy of 2018, declared China as the biggest security threat to the United States, and same happened with the President Biden. The recently published National Security Strategy by President Biden in 2022 also did the same to China, calling China a systematic and threat to the US national security. दूसरी चीज़ कामन जो नाज़रीन तीनों प्रेसिडेंट के अंदर रही स्ट्रेटजी के अंदर, दैट वाज दे ऑल एग्रीड दैट यूएस कैन नॉट कंटेन चाइना, कैन नॉट काउंटर द राइज ऑफ चाइना अलोन. इट नीड्स अलायंस, इट नीड्स allies, it needs partners. Just difference was that President Obama had a narrow view of this region, narrow alliance system, particularly focusing on the Asia-Pacific region. Trump's alliance system was primarily built upon the Indo-Pacific region, making India as a very, very important pillar in this policy. While the President Biden administration has taken a much broader and a global approach in developing alliance system against China, involving G7, involving NATO, involving Africans. We have seen that in 2022, the first American-African summit was held. और कहीं ना कहीं पे अमेरिकन जो स्ट्रेटजी है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो वो करने हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, चाहे वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो कि अब ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे हो, the Americans have made a global strategy to contain China. एक नाज़रीन बहरहाल डिफरेंस जो रहा डिफरेंटली इन तीनों प्रेसिडेंट्स के अंदर, वो ये था दैट प्रेसिडेंट जो ओबामा थे, ही मोस्टली फेवर्ड अ मल्टीलैटरल अप्रोच इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बट मिलिट्री सेंस में ही अवॉइडेड डेवलपिंग अ मल्टीलैटरल institution or using a multilateral institution, multilateral institution against the Chinese. प्रेसिडेंट ट्रंप जो आते हैं, उनकी जो अप्रोच है वो वैसे ही रिपब्लिकन है, वैसे ही पॉपुलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं. तो उनकी जो अप्रोच होती है वो हमें नेशनलिस्ट नज़र आती है. वो मल्टीलैटरल अप्रोच को लार्जली अवॉइड करते हैं. एक क्वाड जो उस प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में स्ट्रांग होना शुरू होता है, वो मल्टीलैटरल सिस्टम तो ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट अ फॉर्मल अलायंस. और नेटो को तो वैसे ही वो एक ऑब्सोलीट ऑर्गेनाइजेशन करार दे चुके होते हैं. प्रेसिडेंट बाइडन की अप्रोच नाज़रीन हमें डिफरेंट नजर आती है, बिकॉज यू हैव टू बिकम ग्लोबल एंड यू कांट बिकम ग्लोबल बाय हैविंग अ बायलैटरल अप्रोच. एंड देयरफॉर
प्रेसिडेंट जो बाइडन की अप्रोच है वो हमें ज़्यादा मल्टीलैटरल अप्रोच नज़र आती है. ही इन्वॉल्व्स मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, ही इन्वॉल्व्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में बात हो, IPEF की बात हो, चाहे वो क्वाड को जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, चाहे वो बात हो मतलब नेटो की इन्वॉल्वमेंट की बात हो, चाहे वो जैसे मैंने कहा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात, जिसको ओल्ड नाम B3W है, उसकी बात हो. The US approach under President Biden is largely driven by his idea that US can't do it alone. It has to have built multiple multilateral alliances in different fields to contain China. इस सेंस में हम ये भी कह सकते हैं नाज़रीन, प्रेसिडेंट ओबामा considered China as a threat, but he underestimated the global influence of China. Same can be said about the Trump, but President Biden understands that China's containment can never take place only in the Indo-Pacific region. You have to make the global alliances because China is a global power necessitating a global initiative, a global strategy, a grand strategy to contain China. And that is why नाज़रीन हम प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसी को हम कह सकते हैं दिस इज़ द रियल ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. Although rivalry was there before that, but at global level पे ग्रैंड स्ट्रेटजी के तौर पर चाइना की कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो हमें प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में नज़र आती है. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट द न्यू कोल्ड वॉर, एन emerging कोल्ड वॉर बिटवीन US and China. But is this cold war built upon the ideological considerations like we said it happened during 1940s onwards, the second half of the 20th century? There are divisions among the scholars. क्या इस कोल्ड वॉर को अगर कैरेक्टराइज करना पड़े तो इसको क्या आइडियोलॉजिकल सेंस में कैरेक्टराइज किया जाएगा, इकोनॉमिक सेंस में किया जाएगा, पॉलिटिकल सेंस में किया जाएगा, किस सेंस में किया जाएगा? उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन वो ये है कि जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव है वो तो लिबरल वर्ल्ड आइडियोलॉजी की बुनियाद पे है, लेकिन चाइनीज़ आइडियोलॉजी को एक पर्टिकुलर नाम देना मुश्किल है. अमेरिकन उसे अथॉरिटेरियन रिजीम कहते हैं, बट अथॉरिटेरियनिज्म इज़ नॉट एन आइडियोलॉजी. सो व्हाट कैन बी कॉल्ड टू चाइनीज़? Some call them the socialist, but China is not a standard socialist. It's a socialism with Chinese characteristics. And that's why नाज़रीन इसे लेबल करना as an ideological conflict will be oversimplification of a very complex Chinese system and oversimplification of the complex conflict that is taking place. अब नाज़रीन आते हैं कि चाइना की स्ट्रेटजी क्या है in this offensive on the part of the West. लेकिन चाइना की स्ट्रेटजीज भी अगेन डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से डिफरेंट हैं. रीजनल अप्रोच में चाइना इज़ ट्राइंग टू बी लेस एग्रेसिव एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ ताइवान. ऑन ताइवान इशू चाइना हैज़ बीन वेरी एग्रेसिव, वेरी सेंसिटिव. जिस हमने लास्ट एपिसोड में कहा कि ताइवान के ऊपर जब नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया, चाइनाज रिस्पांस वाज वेरी एग्रेसिव ऑन दैट बिकॉज दे कंसिडर्ड ताइवान एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मदरलैंड, द मेनलैंड China. Besides that, China's main strategy has been trying to court the neighboring states, trying to expand its economic footprint in the regional states and also trying to make alliances in the regional states. और उसी context में हमने जो यूनिक चीज़ देखी, BRI का इनिशिएटिव तो काफ़ी पुराना है, 2013 से ऑनवर्ड्स हमें BRI नज़र आता है, रीजनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का. बट in a new development, China has been trying to build security alliances here. हमने देखा सोलोमन आइलैंड के साथ उनकी एग्रीमेंट होता है 2022 के अंदर. हमने कम्बोडिया के अंदर उनका मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ता हुआ नज़र आता है हमें. और इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है इन दिस ईस्ट चाइना सी एंड द साउथ चाइना सी, स्पेशली इन द साउथ चाइना सी, वो हमें इंक्रीज नज़र आती है. और जो आर्टिफिशियल आइलैंड जो साउथ चाइना सी में चाइनीज़ बना रहे हैं, दे आर नॉट जस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड्स, दे आर बीइंग टर्न्ड इनटू a small military outposts of China in the deep South China Sea as well. तो चाइना की जो अप्रोच है वो रीजनल सेंस में ब्रॉडली तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है जिसमें दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अलायंसेज. दे नो दैट इफ दे एंट्रेंच देमसेल्व्स in this region economically and militarily, that would dilute the US influence in the region and that would have some sort of security to the Chinese interest. अगर मैं ग्लोबल सेंस में बात करूँ नाज़रीन, तो चाइना की स्ट्रेटजी जो ग्लोबल सेंस में है दैट इज़ ड्रिवन बाय इट्स जियो इकोनॉमिक वन. BRI इज़ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ चाइना एज अ ग्लोबल पावर. अक्सर कहा जाता है दैट BRI has a certain Chinese strategic vision. Yes, and what is that vision? That vision is to portray itself as a power that is more concerned about the economy of the states, about the infrastructure, about the business, rather than the ideological considerations. We have seen नाज़रीन कि अमेरिकन जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है which prouds itself
on the basis of the liberal values has been challenged in recent decades for so many events. चाहे वार ऑन टेररिज्म में एक्सेसेस कमिटेड की गई हों, चाहे इराक वॉर के अंदर जो एक्सेसेस कमिटेड की गई, जो लाइज बोले गए, चाहे वो अमेरिकन एब्रप्ट विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान हो, कंप्रोमाइजिंग ऑन द आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस, चाहे वो फेलियर ऑफ कैपिटलिज्म टू प्रिवेंट टू मेजर डिजास्टर्स इन द लास्ट मोर देन अ डेकेड. One was the 2008 financial crisis, and then the COVID and the resultant economic crisis, और most recently नाज़रीन रशिया यूक्रेन वॉर के नतीजे में जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ, जो डेवलपिंग स्टेट्स को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, अमेरिकन वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ की बुनियाद पे जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई गई, उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो डेवलपिंग स्टेट पे बहुत ज़्यादा हैं. तो डेवलपिंग स्टेट्स में एक पुश डेवलप हुई, should we sacrifice our people and their economic development at the cost of the imported Western liberal values? That's a huge question that people ask in the Eastern world, in the developing world, global Southern world today. And that's why Chinese are trying to exploit this scenario, and they are trying to give a message that the Chinese approach is only meant to provide them an infrastructure that helps them build their economy. Whatever their ideological considerations, it is up to them to decide, and China would only help them in economic field. So चाइना की जो स्ट्रेटजी है, इट इज़ लार्जली वर्किंग, इट इज़ इफेक्टिव, एंड दैट्स वाई हमने देखा प्रेसिडेंट बाइडेन की जो अप्रोच है उसमें प्रीडोमिनेटली हमें जो है वो इकोनॉमिक डायमेंशन नज़र आती है, और वो एक मेजर इनिशिएटिव्स ग्लोबली शुरू करते हैं टू विन बैक द डेवलपिंग स्टेट सपोर्ट, स्पेशली थ्रू B3W एंड नाउ व्हाट वी कॉल PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो है वो उस सूरत में हमें नज़र आ रहा है प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसी. तो कहीं ना कहीं पे हमें नाज़रीन नज़र आता है कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश है, दैट इज़ नाउ मोर फोकस्ड ऑन विनिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड, स्पेशली थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, थ्रू लोन्स, थ्रू एड्स, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब नाज़रीन आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में क्या इम्प्लीकेशंस हो रही हैं, व्हाट दिस कॉन्फ्लिक्ट एंटेल्स for the region of the Indo-Pacific as well as the international community. नाज़रीन अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो जो ब्रॉड इम्पैक्ट हैं इसके ऊपर वो प्रीवियस कोल्ड वॉर की तरह हमें किसी तरह नज़र आते हैं, और वो है द आइडिया ऑफ अ काइंड ऑफ ग्लोबल पोलराइजेशन, ब्लॉक पॉलिटिक्स इज़ ग्रोइंग, बट डिफरेंस इज़ दैट दिस टाइम जो स्टेट्स हैं they do not see themselves as partner to one state. They are trying to balance out their relationship between major powers, and Pakistan is an example. Pakistan की जो policy है, that has been very effective this time, because we have witnessed what happened to Pakistan when we took sides, when we hyphenated ourselves with the Western Bloc, which had certain cost to us. So this time Pakistan and many other such states, they are trying to balance their partnership with China and the West, because they understand that ultimately this Cold War will be over, but siding with one will have a huge cost to them. So they're trying to extract maximum benefits from both competing powers. Second, नाज़रीन जो implication है, this time the world is not divided on basis of ideologies. It is divided on the basis of the interests. तो कहीं ना कहीं पे आइडियोलॉजिकल्स जो है फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करती हमें उसमें हमें कहीं ना कहीं पे इसके नतीजे में एक इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो फॉल्ट लाइन नज़र आती हैं बिटवीन मेजर पावर्स. फिर नाज़रीन एक और जो डिफरेंस है वहाँ पे, इन दैट कोल्ड वॉर इनिशियली वी हैव सीन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हमें वॉर्स नज़र आती हैं, चाहे वो कोरियन वॉर हो, चाहे वो बर्लिन क्राइसिस हो, और बहुत सारी नज़र आते हैं. लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें वो उस तरह की वॉर लाइक सिनेरियो बिटवीन यूएस एंड चाइना नज़र नहीं आती. वन ऑफ द पोटेंशियल्स जहाँ पे या फ्लैश पॉइंट जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दैट इज़ ताइवान. बट इवन वहाँ पे भी हमने देखा कि अल्टीमेटली ब्रिकमैनशिप प्रीवेल्ड, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ऑल्दो अमेरिकन स्टिल सजेस्ट दैट इट इज़ इमिनेंट. एक और नाज़रीन इम्प्लीकेशन जो हमें नज़र आती है इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में, वो ये इम्प्लीकेशन है कि इससे एक इकोनॉमिक कंपटीशन हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है. मिलिट्री बिल्डअप तो है, बट प्राइमरी फोकस इज़ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक बिल्डअप. हमें एक रेस नज़र आती है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक रीच की, हमें फ्री ट्रेड्स की कंपटीशन नज़र आता है, हमें इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कंपटीशन नज़र आता है, हमें एक लैंडिंग के हवाले से कंपटीशन नज़र आता है बिटवीन द टू मेजर पावर्स, which in other ways is a positive development, because the developing states now have options. Previously it was only BRI, now they have the American model of the PGII as well,
Previously, only we had the Bretton Woods institutions. Now we have Asian Infrastructure and Investment Bank. The Chinese banks are also available for global lending. तो कहीं ना कहीं पे हमें नज़र आता है कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हुई हमें नज़र आती हैं. बट नाज़रीन, इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव फॉलोआउट्स भी हैं. और नेगेटिव फॉलोआउट्स ये हैं, स्टेट्स के लिए जितना ये कॉन्फ्लिक्ट यूएस और चाइना में एस्केलेट होगा, स्टेट्स के लिए डिहाइफिनेट होना, स्टेट्स के लिए उसको बैलेंस आउट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा. बिकॉज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स, तो वीकर स्टेट्स आर अल्टीमेटली मेड टू टेक अ चॉइस एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दम. एक और नेगेटिव इम्प्लीकेशन नाज़रीन, कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक, स्पेशली जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनके नज़दीक, जितना चाइना का राइज स्ट्रांग होता जाता है, उतना अथॉरिटेरियन रिजीम जो हैं उतना एम्बोल्डन होते जाते हैं और उतना ही उनको कुशन मिलता जाता है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. और दे साइट द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एज एन एग्जाम्पल टू इट. They think that if China can assert to the United States, Russians also assert, challenge the West on Ukraine. और इसी तरीके से नाज़रीन बहुत सारे और मुल्क हैं जहाँ पे हमें अथॉरिटेरियनिज्म पावरफुल होता हुआ नज़र आता है, बिकॉज दे हैव द सपोर्ट फ्राम, इफ़ नॉट द वेस्ट, बट फ्राम द चाइनीज़ एंड लाइक माइंडेड स्टेट्स. तो लास्ट इम्प्लीकेशन नाज़रीन, अगर मैं ग्लोबल सिक्योरिटी के सेंस में बात करूँ, तो कोल्ड वॉर्स अल्टीमेटली नेवर हेल्प स्टेट्स, नेवर हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी. बिकॉज व्हेन द कोल्ड वॉर्स हैपन, तो जहाँ कुछ गेन्स आते हैं, जहाँ कुछ प्रोग्रेशंस आती हैं, वहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. और नाज़रीन, जिस तरह वार के बारे में कहा जाता है, स्टेट्स कैन डिसाइड टू बिगिन द वॉर बट दे डोंट डिसाइड टू एंड द वॉर. द लास्ट कोल्ड वॉर लास्टेड फॉर 45 years एंड वी वेस्टेड दोज 45 years टू बिल्ड अ बेटर economic living for the people. To understand the climate, we missed that opportunity in 1960s, 70s and 80s. This Cold War also has certain implications. We are missing the opportunity to deal with major crises like the current global economic crisis, like the pandemic that we faced, like the global financial crisis that world had. इसी तरीके से नाज़रीन, जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं, जितने और इश्यूज़ हैं दुनिया के अंदर जाके, जो डेवलपिंग स्टेट के इश्यूज़ हैं, दे आर सफरिंग बिकॉज द ग्लोबल पावर्स आर टू फोकस्ड ऑन playing a zero-sum game against each other, playing a negative politics against each other. तो हम कह सकते हैं नाज़रीन, जो ग्लोबल पावर्स की राइवलरीज होती हैं, उसमें अल्टीमेट विक्टिम जो होती है वो डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं. एंड दैट्स वाई इट इज़ इन वन वेज अल्टीमेटली इफेक्ट the growth, the development and the progress of the developing states. So to conclude नाज़रीन, इस साइड डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में मल्टीपल जो राइवलरीज जिनका जिक्र किया गया, चाहे ताइवान से लेकर नॉर्थ कोरिया से लेकर एनवायरनमेंट तक, all of those rivalries are ultimately linked with the broad conflict between United States and China. And that United States and China conflict, जिसको emerging Cold War कहा जाता है, it defines the 21st century at least so far. But considering the other monumental challenges like the climate change challenge, I think over the period of time, the ultimate realization will come among the major powers that they have a bigger enemy to deal with, and that is the climate change. And therefore, the earlier they know, the better it is for the world. Thank you Nazeen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.